Jai Jinendra. I am Nitu Jain. Welcome to my channel Success Angel. In this video, we are going to discuss Section 8 of Companies Act 2013 in detail. So stay with me till the end of this video. Section 8 deals with the formation of companies with charitable objects. Means where the motive of the company is not to create the profit but some social welfare. And because provisions with respect to such companies are given in Section 8, therefore, such companies are known as Section 8 companies. In the previous company law, that is Companies Act 1956, provisions related to such companies were given in Section 25. So they were called Section 25 companies. तो आपको कहीं भी अगर सेक्शन 25 लिखा दिखाई दे तो आप मान के चलिएगा कि उसी कंपनी की बात की जा रही है जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 में बनाई जाती है। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 8 क्या कहता है। Subsection 1 deals with the conditions subject which a new company can be registered as Section 8 company. Subsection 1 में 3 कंडीशंस बता रखी है। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही आरओसी इस सेक्शन में कंपनी को रजिस्टर करता है। लेट मी रीड सबसेक्शन 1. Where it is proved to the satisfaction of the central government, here the power of central government is delegated to ROC. So we can say that where it is proved to the satisfaction of the ROC that a person or an association of persons proposed to be registered under this act as a limited company. Note, in this section only limited company can be registered. We cannot register any unlimited company in this section. In simple words, Section 8 company can be either limited by shares or limited by guarantee. So, where it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of persons proposed to be registered under this act as a limited company has in its objects the promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment or any such other object means any object which is of charitable nature, intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects, means whatever income company will earn, it will use it only for its charitable objects, and intends to prohibit the payment of any dividend to its members. मतलब कंपनी अपनी कोई भी इनकम एज डिविडेंड मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरओसी may by license issued in such manner as may be prescribed and on such conditions as it deems fit, allow that person or association of persons to be registered as a limited company under this section without the addition to its name of the word limited, or as the case may be the words private limited, and thereupon the ROC shall on application in the prescribed form register such person or association of persons as a company under this section. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने ये बात सेक्शन 3 में भी डिस्कस की थी कि सेक्शन 8 कंपनीज को अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना होता। अच्छा, ये एज में बी प्रिस्क्राइब या इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो लिखा हुआ है वो कहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है? रूल 19 ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो इस सबसेक्शन में जो 3 कंडीशंस बताई गई हैं, अगर किसी कंपनी के एमओए में ये तीनों कंडीशंस होगी तो ही आरओसी उस कंपनी को इस सेक्शन में रजिस्टर करेगा। सेक्शन 8 कंपनीज का एमओए भी अलग होता है। वैसे तो किसी भी कंपनी के एमओए में 6 क्लॉजेस होते हैं। नेम ऑफ कंपनी, state in which registered office of the company is situated, objects of company, capital clause, liability clause and subscribers to the MOA। पर सेक्शन 8 कंपनी के MOA का फॉर्मेट डिफरेंट है। ऐसी कंपनीज के MOA के लिए फॉर्म INC 13 है। लेट मी शो यू।
देखिए यहाँ बाकी क्लोजेस के साथ साथ कुछ डिक्लेरेशंस है जो इस सबसेक्शन में बताई गई है, जैसे कि कंपनी अपना प्रॉफिट सिर्फ अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के प्रमोशन में ही यूज कर सकती है। कंपनी अपने प्रॉफिट का कोई पार्ट किसी भी फॉर्म में मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। लॉ की इंटेंशन क्लियर है। अगर आप जन सेवा के लिए कंपनी बना रहे हैं तो उस कंपनी से ना तो कोई मेंबर और ना ही कोई आउटसाइडर किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न कर सकता है। कंपनी की प्रॉपर्टी और इनकम सिर्फ जन सेवा के लिए ही यूज होनी चाहिए। Subsection 2 deals with the privileges and obligations of Section 8 companies. According to subsection 2, the company registered under this section shall enjoy all the privileges and be subject to all the obligations of limited companies. इसका मतलब इस एक्ट में सेक्शन 8 कंपनीज को जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस मिलती है, इन एडिशन टू दोज सेक्शन 8 कंपनीज को सारी प्रिविलेजेस भी मिलती हैं जो बाकी नॉन सेक्शन 8 लिमिटेड कंपनीज को मिलती है। इन द सेम वे इस एक्ट में सेक्शन 8 कंपनीज पर जो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनके साथ साथ सेक्शन 8 कंपनीज पर वो सारी ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल होती हैं जो बाकी नॉन सेक्शन 8 लिमिटेड कंपनीज पर होती है। Subsection 3 deals with the membership of Section 8 company. As a thumb rule, only such persons can become the member of a company who can enter into the contract, means either a natural persons जैसे कि आप और मैं, or an artificial person having legal existence in the eyes of law जैसे कि कोई कंपनी या LLP. Therefore, a partnership firm, whether registered or not, cannot become the member of any company. But according to subsection 3 of section 8, a firm may become a member of the section 8 company. तो याद रखिए कोई भी फर्म किसी भी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। Subsection 4 deals with the alteration of MOA AOA of Section 8 companies. According to subsection 4, clause 1, a company registered under this section shall not alter the provisions of its memorandum or articles except with the previous approval of the ROC. देखिए वैसे तो कोई भी कंपनी अपने MOA या AOA जनरल मीटिंग्स में प्रॉपर रेजोल्यूशंस पास करके अमेंड कर सकती है, पर जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 8 कंपनी के MOA और AOA में कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्लिगेशंस होती है विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसीलिए सेक्शन 8 में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि ऐसी कंपनीज बिना ROC की अप्रूवल के अपने MOA या AOA को अमेंड नहीं कर सकती। मतलब सिर्फ जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने से काम नहीं चलेगा। Further, according to subsection 4, clause 2, a company registered under this section may convert itself into company of any other kind only after complying with such conditions as may be prescribed in Rule 21 and Rule 22 of Companies Incorporation Rules. तो सेक्शन 8 कंपनी नॉन सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है by satisfying the conditions specified in the law and by taking proper approvals. Subsection 5 deals with the conversion of non-section 8 limited companies into section 8 companies, where it is proved to the satisfaction of the central government, power is delegated to ROC, that a company limited registered under this act or under any previous company law has been formed with any of the objects specified in clause A of subsection 1, means charitable objects, and with restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clause B and C of that subsection, means
restrictions with respect to application and distribution of the income. It may, by license, allow the company to be registered under this section subject to such conditions as it deems fit and to change its name by omitting the word limited, or as the case may be, the words private limited from its name, and thereupon the ROC shall, on application in the prescribed form, register such company under this section, and all the provision of this section shall apply to that company. मतलब कोई भी नॉन सेक्शन 8 कंपनी वेदर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एक सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है बाय सेटिस्फाइंग द कंडीशंस specified in the law and by taking proper approvals. Subsection 6 talks about the revocation of the license granted to a company under this section. According to subsection 6, the central government, means ROC, may by order revoke the license granted to a company registered under this section if the company contravenes any of the requirements of this section or any of the conditions subject to which a license is issued, or the affairs of the company are conducted fraudulently or in a manner violative of the objects of the company or prejudicial to public interest. And central government may direct the company to convert its status and change its name, to add the word limited or the words private limited as the case may be to its name, provided that no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard. A copy of every such order issued in this section shall be given to the ROC. Further, according to subsection 7, where a license is revoked in this section, the central government may by order direct that the company be wound up under this act or amalgamated with another company registered under this section. But only if central government is satisfied that it is essential in the public interest. Again, no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard. According to subsection 8, where the central government is satisfied that the company whose license is revoked should be amalgamated with another company registered under this section and having similar objects, then central government may by order provide for such amalgamation to form a single company. According to subsection 9, if central government directs that the company should be wound up under this act and on the winding up or dissolution of such company, there remains any asset after the satisfaction of debts and liabilities, such assets may be transferred to another company registered under this section and having similar objects, or may be sold and proceeds thereof shall be credited to Insolvency and Bankruptcy Fund formed under section 224 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It should be noted that according to subsection 10, a company registered under this section shall be amalgamated only if another company registered under this section and having similar objects. I hope section 8 of Companies Act 2013 is now clear to all of you. Chaliye, in the next video, I will discuss another section of this act. For videos of other sections and topics of company law, see links in the description box. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय जिनेंद्र।